Hello everyone. Today we are going to see how we can know the effects of missense mutation through a website or software. It is called PolyPhen-2. As you can see, it is by Harvard University. Prediction of functional effects of human SNPs, single nucleotide polymorphisms. What you have to do here, as you can see, polymorphism phenotyping v2. Here you have to upload the FASTA format of the protein that you are working with, and here you have to understand that AA1 means the wild type amino acid and AA2 means the mutated amino acid. Suppose valine से methionine change हो रहा है, ठीक है, वैलिन से मिथियोनिन चेंज हो रहा है 66 पोजीशन में, तो वो पोजीशन यहाँ पे देना होगा 66, और यहाँ पे आपका जो म्यूटेटेड वर्जन है वो देना होगा मिथियोनिन। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रिप्टोफैन से आइसोल्यूसिन चेंज हो रहा है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन वाइल्ड टाइप है एंड आइसोल्यूसिन है क्या, म्यूटेटेड वर्जन। तो ये टू पोजीशन में सपोज चेंज हो रहा है। And how you can download the first sequence or how you can find the first sequence, I will show you. As at first you have to go to the NCBI website, then in all database you have to choose protein, okay, then you have to type here BDNF gene. As I have worked on BDNF gene, so I am typing here BDNF. You can type your targeted gene here, then here is the wild type form of BDNF. I'm choosing this. You can directly go here. FASTA. You have to just click on FASTA. Then you can copy the sequence from here and just paste it here and then submit query. So here is the result format. आप यहाँ पे रिजल्ट्स सेक्शन में व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको रिफ्रेश करना होगा जब तक रिजल्ट्स ना आए। तो जब भी रिजल्ट्स आ जाएगा तो यहाँ पे एक व्यू टाइप का आपका एक क्लिकेबल लिंक आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एज यू हैव क्लिक्ड एंड यू कैन सी हियर, ये क्या है कि it is showing that it is probably damaging. That means tryptophan से जो isoleucine change हो रहा है वो प्रोटीन में एक deleterious effect create कर रहा है, and that protein is going to disrupt the machinery of a body, or something that you can say creating any disease. Okay. सो BDNF एक जीन है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो न्यूरॉन्स के प्लास्टिसिटी में हेल्प करता है। तो वो प्लास्टिसिटी डैमेज कर सकता है अगर ये मिससेंस म्यूटेशन आया तो। सपोज यू आर ट्राइंग टू फाइंड एनी मिससेंस म्यूटेशंस दैट यू आर वर्किंग विथ अ डिजीज, यू कैन चेक थ्रू दिस वेबसाइट। ओके, सो रिजल्ट फॉर्मेट ऐसे आएगा, एंड यू कैन ऑल्सो चेक द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पोर्शन फ्रॉम हियर। ओके, so thank you everyone. Stay tuned for the upcoming videos in this bioinformatics playlist. Okay, thank you.